सो हेलो फ्रेंड्स, इस सेक्शन में हम लोग क्रिएट करेंगे वेबसाइट का सेक्शन नंबर 3। सो अभी तक हमने एक हीरो सेक्शन बनाया और एक हमने सेकंड सेक्शन बनाया हेडिंग वाला। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ थर्ड सेक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट क्लिक ऑन दिस सेक्शन एंड क्लिक ऑन डुप्लीकेट। सो आई एम सेविंग माय टाइम। सो मैंने उसी सेक्शन को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लिया है, राइट। Now what I want, मुझे यहाँ पे 3 column layout चाहिए, so I'm going to click on a first column, right click, and I'm going to add another column. So now I have 3 columns here, right? So this is basically what I want. ठीक है? Okay. So now what I want is कि ये जो third column है, ये first column की जगह आ जाए. So I'm going to drag it and I'm going to put it on first place. So बहुत easily आप widgets जो है वो navigate करवा सकते हो within a section and outside a section also. ठीक है। अब जैसे दिस फ्रेश एंड बायो हेडिंग आई डोंट वांट, सो आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन डिलीट। सो दिस सेक्शन आई डोंट वांट। सो अब जो सेकंड ये सेक्शन आ रहा है, वेजिनिज्म इज अ जॉय, आई वांट दिस सेक्शन आल्सो टू बी मूव्ड। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रिंग इट हियर, राइट। एंड दिस सेक्शन जो हमने लिखा है इसको अब हम अपने टेक्स्ट के साथ कन्वर्ट कर लेंगे। सो आई हैव अ टेक्स्ट, लेट्स गो फॉर दिस। So let's suppose I'm going to copy this, and this is a text that I'm going to change. ठीक है, I'm going to change this. So this is a text which I am going to change. इसकी अब पैडिंग भी थोड़ी सी चेंज करेंगे. So I'm just going to select this column. We're going to advance, and I want the padding needs to be 20. So I'm just going to press this 20. ठीक है. So इतना text मुझे यहाँ पे चाहिए. So I'm going to click on update button. That's it. And ये जो सेकंड फोटो है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन अ हेडिंग, एडिट कॉलम, और मैं इसकी पिक्चर चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई और पिक्चर चाहिए, सो आई एम गोइंग टू स्टाइल, और यहाँ पे जो इमेज आ रही है, ठीक है, आई एम गोइंग टू अपलोड एन इमेज। सो मुझे कोई और इमेज चाहिए, सो लेट्स सी कौन सी इमेज हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। विल टेक दिस इमेज। सो ये इमेज मैं यहाँ पे लेके आने लगा हूँ, टू कॉपी इट, राइट, एंड यहाँ से मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ। सो दिस इज द इमेज दैट आई वांट हियर, right? So if you want to change this image position, you can go back to columns, और यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने सेंटर सेंटर कर दिया, that is looking better, right? Okay. Now in third column, first of all what I want कि जितना भी कंटेंट थर्ड कॉलम में है वो मिडल लाइन हो जाए। सो हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, वी गो टू लेआउट, और वर्टिकल अलाइन जहाँ पे आ रहा है उसमें से मैं इसे मिडल कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट वी वांट, राइट। नाउ व्हाट आई वांट इज कि इस कॉलम का जो बैकग्राउंड है वो ग्रेप कलर हो जाए। सो आई एम गोइंग टू स्टाइल, बैकग्राउंड टाइप, और यहाँ पे मैं ग्रेप कलर का बैकग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है, राइट। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, नाउ आई एम गोइंग टू गिव this a margin of 10 pixel. So first of all, I'm going to just give it a text color, and I'm going to give it a white color, right? This is what I have to do. And next thing which I'm going to do is I'm going to advance, and I'm keeping a margin of 10, right? Now what I'm going to do, I'm going to change its text. So text में मैं लिख रहा हूँ since 1998. So this is what basically I want, and I'm going to put it in center. ठीक है जी। And now I just want to change its padding also. So I'm going back to advance, and जो padding है वो मैं change कर रहा हूँ, like I want it 0, and I'm first going to unlike it. So first it is 0, then I'm going to put in 30, 0 and 30. So this is basically a padding that I want, right? सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो मेरे पास एक हीरो सेक्शन में बटन है, ये वाला और मेन्यू, ठीक है जी, आई एम जस्ट वांट टू कॉपी दिस। सो मैं इसे राइट क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉपी इट, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इट बिलो द हेडिंग। सो मुझे हेडिंग के नीचे पेस्ट करना है, सो आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर,
ठीक है, our menu. So this is basically what I want. Okay, so now in our menu, I'm going to change it. I'm going to write it here or story. ठीक है, and one is this, and second what I want is since 1998 के ऊपर एक इमेज आ जाए. So I'm going to go back to widget menu and मैं यहाँ से image लेके आ रहा हूँ and I'm going to drop my image here. So we're going to put it here. So मैं यहाँ पे अब एक image upload करने जा रहा हूँ. So I'm going to click on image and let's take a good image. Let's take this image cooking. I'm going to put it here. ठीक है, so ये एक image है. अब इसकी width बहुत ज़्यादा है, so I'm going to go to style and I'm going to change its width to 20 pixel, right? So that's it. This is it. This is basically what I want, right? This space is not coming according to my wish. जैसे आप देखेंगे बाकी दो की स्पेसेस ज़्यादा है, इसकी कम है, राइट? सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कॉलम के एडवांस सेक्शन में जाके नीड टू गिव इट अ मार्जिन. Not to this image, not to this image, but I'm going to select a heading section and section के advanced में जाके I'm going to give it a margin of 10. Like, now it's better. Now it's equal. So this is what we have to create. This is a section 3, right? So we have created section 1, section 2, and section 3, right? In next video, we'll create section 4. Thank you.